Today we are going to cover testing flow. It's likely you will need to run a number of tests to establish the KPI and find a scalable proof of concept for a Loom alchemy. Although we have established a really good set of stimuli, we have done all the heavy lifting for you, but still you might need to do it. And this video assumes that you have watched acquisition commencement in full, specifically the modules on the scientific methods, metrics and systems thinking. So now starting with ceteris paribus, with other conditions remaining the same or other things being equal. So basically what it means is कि whenever we run a test, we need to make sure that there are certain constants which remain the same and then there are certain things जो हम लोग change करते हैं. This testing process will only work if you iterate one variable at a time. Iterating multiple variables makes it impossible to discern cause from effect. इसका मतलब है अगर आप बेसिकली बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ चेंज कर दोगे तो आपको कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ की वजह से रिज़ल्ट अच्छा या बुरा आया. बेसिकली ब्लाइंडिंग अस फ्रॉम व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज नॉट. Resist the impulse to make random changes or change multiple variables. For example, if you change your lead source and copy at the same time, the results gets worse. We do not know if it was the copy or the lead source change that caused the damage. तो इसीलिए it's better कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ को चेंज करें. Now let's start with testing the Loom view rate. So, in isolation, the Loom view rate measures the effectiveness of body copy, lead quality and offer. Overall Loom sent to Loom view rate KPI should be 15%. इसका मतलब अगर आप दिन के 100 मेल्स भेजते हो तो कम से कम 15 लूम्स ओपन होने चाहिए. The sample size required should be at least 300 looms sent. The constants for this test are deliverability needs to be perfect and cold follow-ups must be consistent. Here is the equation for Loom view rate. So let's say version 1 of our test means O1 यानी offer 1 plus C1 यानी copy जो हमारी email की body है वो plus L1 यानी कि the source of leads gives out the Loom view rate. तो version 1 is basically offer 1 plus हमारी email की body copy 1 plus हमारी leads की source 1. It gives out the Loom view rate. So in other words, version X is offer plus copy plus lead quality, which is the Loom view rate. Your first test will be version 1. This is where you are testing your first offer variant, your first copy variant and your first lead source. If version 1 does not produce a Loom view rate in KPI जो 15% है, you will need to go to the troubleshooting resource. Once troubleshooted, your next test will be version 2. So this is where you will be testing one new variant and keeping the other to the same. तो let's say आपने सबसे पहले अपना version 1 बनाया, then you start testing it, you start troubleshooting it. Once troubleshooted, you will now test version 2. This is where you will be testing one new variant and keeping the rest of them same. यानी let's say offer हमारा same रहेगा, offer version 1. हमारी lead की source, let's say we find the leads from LinkedIn, वो भी same रहेगी and we would just change our email copy and we would see it again. So if version 2 does not produce a Loom view rate in KPI, you will need to go to the troubleshooting resource जो हमने last module में cover की थी, where it is clearly mentioned कि क्या क्या चीज़ों से आपके Loom view rate पे फ़र्क पड़ेगा and you will try to fix it. Once troubleshooted, your next test will be version 3. This is where you will be testing one new variant and keeping the other two same. तो let's say यहाँ पे आपने offer 1 version 2 offer का version 1 copy का version 2 and lead source का version 1 किया. अब आप offer का version 1 रखते हैं, copy का version 2 जो आपका था वो रखते हैं and इस बार आप lead source change करके देखते हैं. And इस तरह से you will keep changing your variables until your Loom view rate is in the KPI, which is 15%. Once a few variants, like after only a few variants tests, you should be able to establish a Loom view rate within KPI. It is not at all difficult. Once you have Loom view rate in KPI, do not change any of these variables. If a new test produces a Loom view rate which is worse than the previous test, let's say जब आपने ये किया तो आपको Loom view rate आया 11% and जब आपने ये चीज़ की अपनी लीड सोर्स चेंज की एंड आपका Loom view rate अब और कम आया सिर्फ 8%. तो इस केस में यू विल गो बैक टू दिस टेस्ट इटसेल्फ एंड इस बार आप यहाँ से फिर से कुछ और चेंज करेंगे. यू विल
regress back to the original test and iterate a different variable. We only want to make progress with this. हम लोग इसमें सिर्फ तभी चेंजेस लाएंगे अगर उनसे हमें इम्प्रूवमेंट दिखती है. अगर हमें उनसे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती तो हम लोग उस चीज़ को नहीं करेंगे. वी विल रिग्रेस बैक टू द ओरिजिनल वर्जन एंड हम कुछ और चेंजेस करेंगे. Once you have a 15% loom view rate, you will go to test the PRR, the positive reply rate. Once you have nailed the LVR, loom view rate, it's time to nail the PRR, the positive reply rate. Overall looms sent to positive reply rate, the KPI should be 3%. मतलब लेट से आपने 100 emails भेजे तो आपको एटलीस्ट 3 replies आने चाहिए. एंड लूम व्यू टू पॉजिटिव रिप्लाई रेट शुड बी 20%. इसका मतलब लेट से अगर आपको 20 लूम व्यूज़ आए 100 ईमेल्स में से, अब उन 20 में से मिनिमम 20% यानी कि 4 रिप्लाइज़ आपको आने चाहिए. तो अगर आपके 20 लूम व्यूज़ आए तो मिनिमम आपको 4 रिप्लाइज़ आने चाहिए. In isolation, the positive reply rate measures effectiveness of a audio file and its deliverability. तो ऑडियो फाइल की जो स्क्रिप्ट होती है एंड ऑडियो फाइल की जो डिलीवरी होती है उसको ये मेजर करता है. स्क्रिप्ट बेसिकली जो आपने कंटेंट लिखा है एंड डिलीवरीज हाउ यू स्पीक इट. आर यू मोनोटोनस, आर यू रोबोटिक, आर यू एंथुजियास्टिक, आर यू साउंडिंग हैप्पी एंड थिंग्स लाइक दैट. अब इसके लिए सैम्पल साइज़ रिक्वायरमेंट होती है 45 लूम व्यूज़. ये है 15% 300 लूम्स का. 300 का 15% इज़ 45 एंड इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी स्टैब्लिश लाइक दिस इज़ वाई वी स्टैब्लिश द पॉजिटिव रिप्लाई रेट बिफोर द लूम व्यू रेट. तो आपको यहाँ पे मैंने जब बताया कि 300 लूम्स आपको मिनिमम भेजने होंगे एज अ सैम्पल साइज़ फॉर द टेस्ट एंड आपका KPI 15% होना चाहिए. तो अगर ये चीज़ मैच करेगी तो in that case you will have to at least test 45 loom views as well. Now the constants for this test are the loom view rate needs to be in KPI. It indicates कि आपकी email deliverability is good and your offer is good as well. अब इसके साथ में आपकी audio quality in the loom audio file should be great and your looms must be properly named and configured. looms को कैसे configure करना है हम आगे वाले modules में आपको बताएंगे. Moving forward, here is the equation for positive reply rate. Version 1 is offer 1 plus script 1 plus delivery 1, which is the positive reply rate. So in other words, version X is offer का version plus script का version plus delivery का version, which gives the PRR. Your first test will be version 1. This is where you are testing your offer variant, your first offer variant, your first script content and your first delivery style. Let's say version 1 does not produce a positive reply rate in KPI, you will need to go to the troubleshooting resource. Once troubleshooted, your next test would be version 2. आपको जो troubleshooting resource दी गई है लूम डॉक्टर नाम से, उसमें positive reply rate को कैसे फिक्स करना है क्लियरली बताया गया है. तो बेसिकली जब आप अपने version 1 को टेस्ट करेंगे एंड अगर वो KPI में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आपको उसको troubleshoot करना है एंड नेक्स्ट टेस्ट होगा version 2. Here you will only be testing one new variant and बाकी को आप constant रखेंगे. तो let's say offer is still version 1, delivery का जो स्टाइल है, बोलने का जो स्टाइल है, that is also version 1 same as the previous one, लेकिन आपने स्क्रिप्ट में कुछ changes करे. What this means is you are keeping the delivery style the same, very similar tone to the original script. You are not trying to add a new audio file delivery method. लेट्स से वर्जन 2 ने भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए KPI के अंदर, यू विल नीड टू गो टू द ट्रबल शूटिंग रिसोर्स अगेन एंड वंस यू ट्रबल शूट इट दिस टेस्ट वुड बी वर्जन 3. दिस इज़ वेयर यू विल बी टेस्टिंग वन न्यू वेरिएंट एंड कीपिंग द अदर टू सेम. तो इस बार भी हम ऑफ़र को सेम रखेंगे, स्क्रिप्ट हमारी वर्जन 2 थी हम उसको वही रखेंगे एंड इस बार हम डिलीवरी का नया स्टाइल चूज़ करेंगे. वट दिस मीन्स इज़ यू आर ट्राइंग अ टोटली डिफरेंट डिलीवरी स्टाइल, न्यू टोन, अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग द स्क्रिप्ट, डिफरेंट पेसिंग, डिफरेंट स्पीड. नाउ दिस इज़ वेरी हार्ड टू मेजर, दिस इज़ नॉट समथिंग that you can track, not something that you can measure, but it is something which you can understand. You should get it. तो इस तरह से you will keep running the test until the positive reply rate is in the KPI. After a few variants, you should be able to establish a PRR within the KPI. Once you have a positive reply rate in the KPI, you don't need to change any of these variables. If a new test produces a positive reply rate worse than the previous test, फिर आपको दोबारा ओरिजिनल टेस्ट पे जाके कुछ और चेंज करना होगा बिकॉज वी ओनली वांट टू मेक प्रोग्रेस. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके वर्जन 2 में आपको 2.5% का PRR आ रहा था एंड अब
1.1 का आ रहा है तो आप तब भी आगे बढ़ेंगे नहीं. यू विल गो बैक टू द 2.51 एंड यू विल इटरेट अ डिफरेंट वेरिएबल इन दैट. अब ये होने के बाद finally we will be at the appointment booking rate. Once you have nailed the loom view rate and the positive reply rate, it is time to nail the appointment booking rate. Overall looms sent to appointment booking rate KPI should be 1.5%. तो अगर आप दिन में 100 मेल्स भेजते हैं तो आपको मिनिमम 1.5, ऑफकोर्स 1.5 अपॉइंटमेंट्स नहीं आ सकती बट इट्स समवेयर अराउंड 2%. तो आपको दिन में मिनिमम 2 अपॉइंटमेंट्स आनी चाहिए. एंड पॉजिटिव रिप्लाई टू अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट शुड बी 50%. तो लेट्स से आपको 3 लोगों ने रिप्लाई किया ईमेल पे, तो उनमें से कम भी, या लेट्स से 4 ने किया, तो उनमें से मिनिमम 2 पीपल शुड बुक अ कॉल विद यू. In isolation, the appointment booking rate measures effectiveness of your reply style and warm follow-up content. Now the sample size required for this is 9 to 10 positive replies, 3% positive reply rate on 300 looms sent जो हमारा sample size है, that is basically 9 to 10 positive replies. and अगर आपके 9 to 10 positive replies आते हैं तो आपको minimum 4 से 5 appointments book होनी चाहिए. The constants for this tests are the positive reply rate should be in KPI. Warm follow-up systems must be consistent. Warm follow-ups must be sent 8 times per prospect. अगर वो 8 बार तक अपॉइंटमेंट नहीं बुक करते, that's when you can think of giving up. Prospects must receive your replies within 12 hours, ideally 6. Calendly optimized according to the acquisition commencement instructions, and plenty of Calendly space should be available and the event should work fine. For the appointment booking rate, this is the equation. Version 1 is offer 1 plus reply style 1 plus warm follow up content 1. तो basically version X would be offer version plus reply style का version plus warm follow up content का version, which gives out the appointment booking rate. Your first test again would be version 1. This is where you will be testing the first offer variant, your first reply style and first warm follow up sequence. If version 1 does not produce an appointment booking rate in the KPI, you will need to go to the troubleshooting resource. Once troubleshooted, you will test it again, and this test का नाम होगा version 2. This is where you will be testing one new variant and keeping the rest of them same. तो let's say offer same रखते हैं हम, reply का style हम change करते हैं, and warm follow up का sequence भी हम same ही रखते हैं. फिर let's say version 2 ने भी appointment booking rate को KPI में नहीं लाया, then you will need to go to the troubleshooting resource again, make the changes, and once troubleshooted, your next test would be version 3. This is where you will be testing one new variant, keeping the rest of them the same as constants. तो version 1 का offer, reply style version 3, let's say version 2 से version 3, and warm follow up का still we will be on version 1, and so on. After a few variants, you will be able to establish an appointment booking rate within the KPI. Once you have this in the KPI, you don't need to change any of these variables. If a new test produces an appointment booking rate worse than the previous test, of course regress back and इस बार कुछ और change करिए, because we only want to make progress with this. After 2 to 8 weeks of sending reasonable volume, that is 100 plus a day, you should have nailed all of these metrics. Meaning if you send 100 looms a day, you will book minimum 1 to 2 calls a day. It's likely your metrics are above KPI. बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि आपके metrics हमेशा KPI से ऊपर ही होंगे. Once you have established all of these KPIs, change nothing. Just run more volume through the system, double, triple or 10 times volume. You can also take all of the stimuli in the system and use it elsewhere. So you can use all of these copies in the ads, in the inbound, in the cold calling, in cold messages, etc. as you have proven the stimuli to work. And अगर stimuli email में काम करती है, as we studied in acquisition commencement, तो it is also going to work in your cold DMs, maybe in your cold call, maybe in your ad campaigns and places like that. Now here is how you can track your test. There is this example test tracking sheet, and you can basically use it, and ये link में आपको मिल जाएगी. You can basically write the test version here. So let's say loom view rate का version 1 is what you are testing, तो offer 1 plus आपकी कॉपी का कौन सा वर्जन आप टेस्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं. तो लेट्स से आपने आज लूम जो भेजे उसमें विच वर्जन ऑफ इट आर यू यूजिंग. तो लाइक दिस, व्हेन यू कीप अ ट्रैक ऑफ इट, you will be able to test it in a much better way. It's simple. Primary metric version X is offer version X plus variable version X plus variable version X.
Now petri dish testing again acquisition commencement में पूरा किया था. If you have a set of variables that produce an appointment booking rate in KPI, don't change them, just increase the volume. If you want to increase the appointment booking rate, take the variables, duplicate them into a petri dish and tweak and test away from your main campaign. नहीं तो हो सकता है आपकी ABR जो फिट थी, जो KPI में थी, आप उसको भी बिगाड़ दें. What this means is that you run the current system and build a separate parallel system that is your testing facility. Don't tweak or change a working system, duplicate it and tweak and test the duplicate while continuing to run the working system. Now this is the Loom alchemic equation. Here is what it looks like when you tie it all together. Version 1 of your Loom alchemy, version 1 of your whole system is offer 1 plus copy 1 plus lead source 1 plus स्क्रिप्ट 1 इंटू डिलीवरी 1, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ में जाती हैं, प्लस रिप्लाइंग स्टाइल 1 एंड फॉर्म फॉलोअप स्टाइल 1 इज़ दी ओवरऑल अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट. एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड एंड दीज आर क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स फॉर द टेस्ट आर डिलीवरेबिलिटी नीड्स टू बी परफेक्ट, आपके ईमेल स्पैम में नहीं जाने चाहिए. कोल्ड फॉलोअप्स मस्ट बी कंसिस्टेंट. लूम व्यू रेट नीड्स टू बी इन द KPI. ऑडियो क्वालिटी नीड्स टू बी ग्रेट. Positive reply rate needs to be in KPI. Warm follow-ups must be consistent. Warm follow-ups must be sent 8 times per prospect. Prospects must receive your replies within 12 hours, ideally 6. Calendly should be optimized according to the acquisition commencement instructions, and there should be plenty of Calendly availability. Now for the follow-up process, I have taught you how to think. This is way more valuable than teaching you which copy works. If you follow the process, you will accomplish a proof of concept that allows you to scale. You must be patient, you must be rational, and you must be scientific. These are not should have, these are must haves. If you don't have this, you will fail. If you act impulsively or if you get emotional, this would not work. All that stands between you and consistent appointments in 2 to 8 weeks of rational, methodological, and slow testing. So do not mess it up by involving your emotions in this process. That is it for the testing flow. Thank you so much. Have a great day.